ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। Om Shanti. Sister Om Shanti. Om Shanti, brother. How are you? Welcome. We are fine. And you? Are you very well. Thank you. okay? How was the journey through this Zoom flight? Was the journey okay? Comfortable? Very good. No problem. Okay. Great. It's a wonder of drama and wonder of science, isn't it? What do you think? True, true. Okay. See, this is our Dr. Jain Bhai, respected Dr. Jain Bhai, and he is an instrument teacher for us, sister. And you see here, Sister Gautami from Lagos, Nigeria, and she has always wonderful fresh flowers all time. Okay. So she is offering fresh flowers from Lagos, from Baba's garden. Beautiful. So you have a garden here? Sorry? Do you have a garden in Lagos? Yes, Lagos. She is from Lagos, Nigeria. Hey, does Baba have a garden in Lagos? Oh, yeah. She is going to translate your class today. So I would like to request Dr. Jain Bhai, please welcome our sister Valariane और प्यारे साथियों, जो आज हमारे वक्ता है वो बहुत विशेष है। गौतमी बहन, शायद मैंने थोड़ी गलती की थी, तो आप जिनेवा से है, जिनेवा स्विट्जरलैंड से, और यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसको यूनाइटेड नेशंस में आप रिप्रेजेंट करती है, तो विशेष व्यक्ति तो है आज हमारे साथ, अपने अनुभव हमारे साथ वो शेयर करेंगी। तो डॉक्टर साहब आप वेलकम करें। अनम्यूट है आपको, अनम्यूट करना है, म्यूट है। We are in Switzerland. Yes, I am now in France. Okay. Because I'm just at the border, but it's there with Geneva, Switzerland. So we are very, very happy to receive you in India, in Baroda. Thank you. So it is a good luck of us that we are meeting the representative of Baba in total world. Means, you know. Yes, it's my luck too, because like this, I get to meet you.
So we are all happy that we are going to listen your experience, wonderful experience, and we will know you better in that way, because we can know each other only and only when we know about and we know about the concern with Baba. So today we would like to enjoy your. जान बूझ के किसी को परेशान करना ठीक नहीं. So which state are you in? We are in India and Gujarat state. In Good. Gujarat, Baroda is well known even Yeah, I have been before in Baroda. Acha. Mm. So Baroda, our university is also well known, and our yeah, city is well known because of the king here, Sayaji Rao Gayakwar, who has made us very known in India, not only in India but in also internationally. Even Baba pronounces it in his Murli. Baba, Vadodara is being remembered by Baba himself. and the Baroda Center also was inaugurated by Maharani of Baroda, Shanta Devi Maharani. और ब्रह्मा बाबा के संकल्प से बड़ौदा सेंटर खुला है. ये अहमदाबाद और भी बड़ौदा. बाबा ने गौतमी में, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि ये अहमदाबाद अभी बड़ौदा में खोलो. और बाबा ने खास जो हमारा हिस्ट्री हॉल है ना, वहाँ नीचे दरी बिठाते थे, उधर की एक दरी बड़ौदा सेंटर के लिए भेजी थी बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने. हाँ, so nice. So, Sister Champaben is saying that this particular center in Vadodara is the inspiration of Brahma Baba himself directly. A for Ahmedabad, B for Baroda. And then the carpet which is being put in Baba's history hall in Pandav Bhavan, Baba has sent one for specially for Baroda Center. It's very special. It holds a good place in the Yagya. Also, please introduce this special Yugal. Dr. Jain, Champaben. We must introduce that way. I heard about them through you a little bit. Please help me add something, because I know that they are really very wonderful people. And Minesh bhai, आप और कहना, क्योंकि मुझे जो थोड़ा पता है मैं बता सकती हूँ. Sister Valariane, this wonderful couple who is sitting in front of you is Dr. Jayant Bhai and Champaben, one of the early jewels, and who has taken Sakar Palna. Yes. Am I right? Yeah. They have taken Sakar Palna, and their marriage is a divine marriage. And they are the teachers for many, 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 many souls. And they are the foundation of the services in Baroda. Actually, Brahma Baba himself permitted their holy marriage. This is the main message. Brahma Baba himself permitted their holy marriage, and then they got married. Okay, so sister, please, you may start sharing your experience. We are eager to listen to your experience, in fact. Okay, so don't feel shy to ask more if you want to know something in particular. Okay, Brother Minesh? No problem. Thank you. And also Sister Gautami and Brother Doctor, don't feel shy to ask. Thank you, Sister Valariane. It's really an honor to have you on this platform. Om Shanti and Swagatam once again. Thank you. And it's an honor for me to be with all of you, really. It's the magic of COVID, right? Otherwise, it wouldn't have been possible. Do you want to translate? Shall I stop after a sentence? Right. Probably should I do this? And जैसे Valariane बहन को स्वागत किया मिनेश भाई, डॉक्टर जैन भाई जी और चंपा बहन जी ने, तो आखिर में इन्होंने कहा कि मेरे लिए ये गौरवपूर्वक बात है आप सबसे मिलना और गर्व की बात है, और ये कहे कि शायद ये कोविड का इंद्रजाल माया जाल है कि हम सब इतना अच्छा मैजिक मिले हैं. Sister,
Sister, excuse me. Please let me confirm the pronunciation of your name. What is the exact pronunciation? My name is usually pronounced Valariane. 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 Okay. Thank you. Valariane. So I took Gyan in 1986 in France. फ्रांस देश में मैं 1996 में ज्ञान प्राप्त किया. I was 24 years of age, and I had 1996. I'm so sorry. 1996, isn't it? मैं वही बोलने वाला था कि 1966. Suddenly, 1986. 1986. I'm so sorry. 19 मैंने अभी वो मुरली पढ़ी अव्यक्त 1996. Sorry. 1986. 1986 में मैंने ज्ञान प्राप्त किया. It actually was something very deep in me to connect with Baba. When I was a small girl already, I used to sit on my bed like a yogi and used to tell God, God, if you don't explain me what I need to know, I will not sleep. And I was 5 years old. And Baba granted me vision answering my question. मैं बहुत छोटी थी, काफी कम उम्र से मुझे भगवान से अंदर से एक किस्म की संबंध था, और ये 5 वर्ष की आयु में थी. तब मैं अपने पलंग पे उठ के बैठ जाती थी और ऐसे योगी की तरह मैं बैठकर परमात्मा से बात करती थी अंदर से कि मुझे जो चाहिए, मेरे प्रश्नों के जवाब देना आवश्यक है, जरूरी है. तो भगवान मुझे एक साक्षात्कार कराया. He has given you a vision. Yeah, to answer my question that I had for him. So जो प्रश्न मैंने पूछा, उस प्रश्न के जवाब में उन्होंने मुझे साक्षात्कार कराया. And what happened is that this answer, this vision that I got was so special that it gave me support and sustained me for many years. ये जो प्रश्न मैंने पूछा, उसके जवाब में मुझे बहुत जो जवाब मिला, वो बहुत सालों तक मेरी पालना हुई उससे. And for me, it was a very strong feeling about God, but my family was not believers. They didn't have a religion. They were materialist. They were communist. तो मैं भगवान के विषय में मेरा दृढ़ निश्चय था, परंतु मेरा परिवार इस विषय में विश्वास नहीं रखता था. वो सभी कम्युनिस्ट को मानने वाले थे. भगवान के बारे में कोई मान्यता उनमें नहीं थी. But I remember I used to sit under a tree and experience peace. I used to love just sitting and feeling the peace. मुझे याद है कि मुझे शांति से बड़ा प्रेम है. बस एक पेड़ के नीचे बैठकर मैं शांति का अनुभव करती थी. And when I was introduced to Baba, immediately the feelings that I had as a child in the answer that Baba gave me and the Gyan were really corresponding very much. And it was like a straight recognition of Gyan. और जैसे मुझे बाबा से परिचय कराया गया, वो परिचय प्राप्त होते ही मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि बचपन से जो मेरे साथ हो रहा था, जो मैं महसूस कर रही थी परमात्मा के प्रति, और जो जवाब मुझे मिला मेरे प्रश्न के जवाब में, मुझे जो साक्षात्कार दिया गया, और फिर अभी तक जो भी मैं महसूस करती थी, और ये ज्ञान और जो मेरे साक्षात्कार, ये सब कुछ मिल रहा था. और कहीं ना कहीं मुझे ये पहले से ही मतलब सब कुछ अच्छा कनेक्ट हो रहा था. And I had very beautiful yoga experiences with Shiv Baba, with Brahma Baba, and with the cycle and the law of karma.
तो मुझे बहुत अच्छे अनुभव है योग में भी, शिव बाबा से भी जब योग लगाती हूँ, फिर ब्रह्मा बाबा का भी साथ का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। और फिर खास करके साइकिल के विषय में, And the law of karma. लॉ ऑफ कर्मा, साइकिल गोला के विषय में और लॉ ऑफ कर्मा सीढ़ी के चित्र के उस विषय में, तो मुझे इन विषयों में काफी अच्छा अनुभव हुआ। And I did not I was in France, in Paris at that time, and I really felt I have to go to Madhuban. I have to go to Madhuban. I want to meet Baba. I want to meet Baba. So with my friend, we took the course together and we went to Madhuban together. तो मुझे मधुबन जाना था, मैं अपने दोस्त के साथ मैंने कोर्स किया और फिर हम दोनों मिलके मधुबन गए। And when we came, it was wonderful to be coming to Madhuban. Of course, because we had not followed the procedure precisely, it was not so easy because we were a little bit naughty. We didn't wait for permission. But we still came, and we were coming to Amrit Vela, Murli, and the class. And so we had permission to meet Baba after 2-3 weeks. When they saw our Dharna and Bhavna, the Yagya said, of course, it was Daddy Kumarka actually who said, yes, of course, these girls can meet Baba. How nice. तो मैं और अब हमारे दोस्त, हम दोनों ने कोर्स किया और हमारे मन में बहुत था कि हम कैसे भी मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, परंतु हम थोड़े मस्तीखोर थे और हम बगैर वो विधि रहती है ना एक प्रकार की मर्यादाओं के हिसाब से चलना है, परंतु वो सब हमने किया नहीं, अर्थात परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो परमिशन लिए बगैर ही हम चले गए मधुबन और वहाँ हम क्लास और योग और सब कुछ करते थे रेगुलरली और हमें देखा गया, हमारी धारणा को देखा गया, तब जाके हमें परमिशन मिला क्योंकि 3 हफ्तों के बाद बाप मिलन का तारीख था। तो 3 हफ्ते हमें देखा गया और वो दादी प्रकाशमणि जी थी जो हमें देखकर ये अनुमति दी बाबा से मिलने के लिए कि ये कुमारियां मिल सकती है करके। Yeah, it was very special. This connection with Daddy was so special. दादी प्रकाशमणि के साथ दादी प्रकाशमणि जी के साथ जो संबंध रहा, जो कनेक्शन रहा, ये बड़ा विशेष है, ये बड़ी विशेष है। And also, of course, the privilege of meeting Baba face to face was also something very, very unique. It was very unique also. With Baba's face to face, to hear them early, but also in 86, we used to have personal meetings. हम मुरलियां तो सुनते थे परंतु बाप मिलन के दौरान जो बाबा से सम्मुख मिलने का मजा था वो कुछ और ही था, इतना इतना अच्छा था कि वो यूनिक, मतलब जैसे वैसा और कुछ नहीं। फिर बाबा से सम्मुख मिलना और फिर उनसे सुनना, वो उन दिनों की बात है जो 1986 में बाबा हरेक से मिलते थे। And so it was like my understanding with Baba was that he was really welcoming us from deep, deep into his heart. ये मेरी समझ है, मेरी सोच है कि मुझे लगता था कि बाबा सच में बहुत ही दिल के गहराइयों से हमें आह्वान कर रहा है, ऐसा मैं महसूस करती थी। So as soon as we came back, we were there for my early class every day. I was living quite far from the center of Paris, so I had to take the metro every morning. And I was an educator, finishing late evening, but still would go into the morning from early and really enjoyed this amazing lifestyle that Baba is offering us. तो और क्या था, मैं बस वापस आई और वापस आने के बाद मैं मुरली सुनने लगी और मुरली सुनने के लिए रोज मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है क्योंकि मैं पेरिस में थी और सेंटर से काफी दूर थी, इसलिए सुबह सुबह मुझे मेट्रो पकड़कर आना पड़ता था, ट्रेन पकड़कर आना पड़ता था और क्लास करके, और मैं वास्तव में एक एजुकेटर हूँ।
So मैं फिर शाम तक मेरी काम होती थी, देर शाम तक काम करके जाती थी और सुबह सुबह वापस फिर मेट्रो पकड़ के मैं क्लास करने के लिए आती थी. And it was straight away that I started to give the course. I was asked by the center in charge to give the course to people. बस और क्या ज्यादा देर नहीं लगी सेवा में शुरू करने के लिए. मैं कुछ ही दिनों में कोर्सेज देना शुरू की. सेंटर वालों ने भी मुझे बोला कि अभी आप कोर्स दो करके. And also my work was such that I could work for 4 days in a row and then take 4 days off. So I used to go and help in the exhibitions, give course in different cities, or such service I was able to do because of my work. मेरा नौकरी भी ऐसी कितना मतलब अच्छा था कि मैं 4 दिन अगर नौकरी करूंगी, जॉब करूंगी और मेरे 4 दिन में छुट्टी ले सकती थी. इसीलिए मैंने काफी सेवाओं में सहयोग दिया. जैसे एग्जीबिशंस करने के लिए सहयोग देती थी. कहीं दूसरे शहरों में भी मैं जाती थी. So we used to organize workshops or parties or such things, and then we would go 2 of us, 3 of us, so that we would be able to share gyan and provide some service to the souls in the new cities. तो हम लोग 2-3 ऐसा एक टीम बनकर जाते थे, वर्कशॉप्स कंडक्ट करते थे. योगा भट्टी भी हमने किया और फिर हम प्रवचन भी देते थे हर एक को वहां जाके. And yeah, the brother was asking me if for my Lokik family it was not it was a bit strange. It was very, very strange for them what I was doing in comparison to what I was doing before. But I did not try to convince them, so they had to respect my wish. They weren't convinced. They didn't think it was very strange for them, but they did not stop me. They couldn't stop me. भाई जी ने ये भी बोला मुझे कि मुझे अपने लौकिक परिवार के बारे में भी बताना है. वह बहरहाल मेरे लौकिक परिवार के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो बड़े विचित्र परिवार है. ऐसा नहीं कि मुझे उन्होंने स्वीकार किया. मेरा ये जो जीवन शैली बदल गई है बाबा से मिलने के बाद, ये नया मार्ग जो मैंने चुना है, ये उनके लिए गवारा नहीं था. मेरा विरुद्ध भी नहीं किया और ना ही मैंने उनको मनाने की कोई कोशिश की, और वो मुझे रोक नहीं पाए. बस. And in 91 I was in Madhuban in December in 1991, and this is when I had a really deep feeling inside that there were so many countries still where Baba had no center, no service. And I really felt for these souls. I really felt that I wanted to be able to provide the message for these people. What's the physical age of yours at that time? I was 29. ये 1991 की बात है, दिसंबर मास की बात है. जब मैं मधुबन में थी तब मुझे अंदर से महसूस हुआ कि ऐसे दुनिया में कई देश है जहाँ के लोगों को अभी तक परमात्मा परिचय नहीं मिला और बाबा का सेंटर तक वहाँ पे नहीं है. तो उन सब आत्माओं के बारे में मेरे को बहुत संकल्प चला कि मुझे कुछ करना है, मुझे संदेश पहुंचाना है उन सभी को. और उस वक्त मेरी आयु 29 वर्ष की थी मैं. So I spoke to Daddy Janki, Sister Mohini from New York, and Daddy Janki said, yes, okay, get ready, and you will do service in South America. तो इस विषय में मैंने दादी जानकी जी से और मोहिनी दीदी जी से मैंने बात किया और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लगता है अभी तुम तैयार हो सेवा के लिए. ठीक है, तुम तैयार रहो देश विदेश में सेवा करने के लिए, खास करके सेंट्रल अमेरिका के इलाकों में. And to put the stamp on it, my local dad, who was living in Brazil, so in South America, left his body.
So I had to go anyway, because I had to take care of all his passing on and possessions and, you know, what, all these things. So in 91, I went to Brazil. So दादी जी की ये जो संकल्प मुझे सेंट्रल अमेरिका में सेवा के लिए जाना है, ये बात को और ज्यादा अच्छा हवा मिला जब मतलब जैसे कोई ठप्पा लग गया, क्योंकि उसी समय मेरा लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा और मुझे उनसे मिलने के लिए जाना ही था, साउथ अमेरिका, ब्राजील। तो मैं 1991 मुझे वहां जाना इतना मुश्किल नहीं लगा। So ब्राजील गई। I left for Brazil in 91, and I took care of my dad's possessions and, you know, all the things you need to do when somebody leaves the body. And at that time, there was no one to take care of Baba's service in Chile. So from Brazil, I went to Chile through Argentina. तो उस दौरान मैं 1991 में अपने पिताजी के देहांत पर गई और उसके बाद उनके जो भी जायदाद है उन सब मामलों में, क्योंकि कोई शरीर छोड़ता है तो उनके बच्चे, उनके जायदाद, सब कुछ उसको सेटल करना पड़ता है। और वो सब कामकाज करने के बाद मुझे पता पड़ा कि चिले में बाबा की कोई सेंटर में देखभाल करने वाले, सेवाएं देने वाले कोई नहीं थे। तो इसलिए मैं ब्राजील से निकली, अर्जेंटीना के द्वारा मैं ऐसे चिले पहुंची। So I went through Argentina also to get one sister called Moira. So together, Moira and I, we went to Chile. तो मैं अर्जेंटीना वाया इसीलिए भी गई क्योंकि मुझे एक और बहन को वहां से साथ में लेना था, वो है सिस्टर मोइरा। हम दोनों मिलकर चिले गए बाबा की सेवाओं का आगे बढ़ाने के लिए। And I didn't speak any Spanish, so I spoke Portuguese but not Spanish. So Baba sent me there and I had to learn Spanish. तो मुझे वहाँ की भाषा, स्पेनिश भाषा मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। वैसे मैं पोर्चुगीज थोड़ा बहुत बोल लेती थी, परंतु बाबा ने मुझे भेजा वहाँ, इसलिए मैं जाने के बाद वहाँ मैंने स्पेनिश सीखा। And the Chileans, they have a very great sense of humor. So they used to say, no, we don't want to correct you because who will make you us laugh when you speak properly? वहाँ के चिली वाले तो इतने अच्छे मजाक मस्ती वाले हैं, वो मुझे कभी नहीं करेक्ट करते थे मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि मैं बोलती थी कि जहाँ गलत है तो मेरे को सुधारो। तो फिर भी वो लोग कहते थे नहीं नहीं, हम बिल्कुल तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर तुम ठीक ठाक भाषा बोलने लगोगी तो हमें हंसने का मौका कहाँ मिलेगा, तुमको जैसे चाहिए वैसे बात करो करके बोलते थे। So it was very special, the service we did there, because none of us were from there, but we encountered a new culture, new Baba's children, and yeah, it was Baba's magic, really. यहाँ तो सच में सेवाएं बड़ी विशेष। Sorry. No, I stayed there for 2 years. Okay. तो यहाँ की सेवाएं बड़ी विशेष रही। एक नई संस्कृति, नया देश और नया नया बाबा के बच्चों को ढूंढना बड़ी रोमांचक रहा यहाँ की सेवाएं, और 2 साल हमने यहाँ सेवाएं की। It was, you know, imagine you go some country you don't know the culture, you don't know the language, you don't know what people want, what people believe. So it was really Baba opening our intellect onto understanding so we could serve better. तो आप समझ सकते हैं, एक नई देश, एक नई संस्कृति, नए लोग, पूरे उन लोगों की जरूरतें क्या है, किस तरीके से हमको उनसे व्यवहार करना है, ये सब बातें बिल्कुल हमारे लिए नहीं थी। और ये बाबा का मैजिक कहे कि बाबा ने हमसे वो सेवा कराई वहां पे। And you know, what did you say, sister? Baba opened your intellect? Baba had to open our intellect for us to understand these people so we could serve them. बाबा ने हमारे बुद्धि का ताला खोला इस विषय में, ताकि हम इन यहाँ के जो लोकल से इनको अच्छी तरह समझे और इनकी सेवा करें इनकी जरूरत के अनुसार। And we were able to stay there as missionary.
both Sister Moira and I, we had a missionary visa. तो बोथ हम दोनों के लिए सिस्टर मोइरा जो अर्जेंटीना से है और हम दोनों भी मिशनरी वीसा में वहां पे पहुंचे. So it अलग was अलग प्रकार के वीसास होते हैं. फॉरेन में जाने के लिए बिजनेस वीसा होता है या स्टडी वीसा होती है, टूरिस्ट वीसा होती है, और हमारा सरपैक है, मतलब परमानेंट नहीं, टेम्पररी रेसिडेंस वाला थोड़े लंबे समय के लिए, और सिस्टर जी ने लिया मिशनरी वीसा. And I was also able to help Baba's service in South America because I soon translated English to Spanish, or I went to Brazil to take care of a UN conference, to help with the UN conference on environment with Sister Gayatri, Sister Mohini, Daddy Janki, Gentiben. No, Gentiben didn't come to this one. So we were, you know, it was a small family really. So we were helping each other. Sister, your video and audio was paused for a while in the beginning of this sharing. Okay. Maybe net I didn't hear. I'm very sorry. Could you please repeat the beginning? problem. I said also the family, it was not very big. So we were helping each other. So I had the fortune to be able to help with the UN conference on environment in 92 in Brazil with Sister Gayatri, Sister Mohini and Daddy Janki. 1992 की बात है. जेनीवा में एक विश्व, Not Geneva, in Brazil. Brazil. They had the environment conference. पर्यावरण, विश्व पर्यावरण समावेश था वहां पे ब्राजील में 1992 में. क्योंकि हम इतने बड़े परिवार नहीं थे तब तक, बहुत कम लोग थे, तो मुझे बहुत सुंदर मौका मिला कि मैं दादी जानकी जी के साथ और फिर मोहिनी बहन, गायत्री बहन, इन लोगों के साथ मुझे ये कॉन्फ्रेंस की सेवा करने में, सहयोग करने में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला. Of course, Brother Ken and Sister Luciana were also part of they were the organizers. So ब्राजील से जो और निमित्त भाई बहन थे, ब्रदर वरिष्ठ भाई ब्रदर केन और फिर लुसियाना बहन, वहाँ की जो लोकल है, और समर्पित बाबा की बच्ची है, ये वहाँ के आयोजक थे ये सब सेवाओं का. But because I could speak Portuguese, it was handy for me to come and help. Portuguese, French, English, Spanish. It was a good way to be able to do Bible service. So, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पोर्चुगीज भी बोल लेती थी, तो इसलिए मुझे उस संगठन में काफी अच्छा सेवा मिला, क्योंकि थोड़ा पोर्चुगीज और फ्रेंच भी और स्पेनिश भी बोल लेती और इंग्लिश भी, तो इतनी भाषाओं की जानकारी होने के हेतु मुझे बहुत अच्छा वहाँ पे सेवा कर हुआ. So there was the option like this to start doing also UN service even in Chile, because in Chile they have one unit called CEPAL, which is the Center for Latin America, UN Center for Latin America. So I had the inspiration, because at that time I did not speak much Spanish, to go and offer some classes there, some Baba's classes, and they were interested in the positive thinking course. So ये चिले में एक सेंटर थी, and that is a center for. This is a UN center. UN means United Nations organization. Yes, UN Center for Latin America. Yeah. UN Center, UN वालों का वहाँ एक केंद्र स्थान है जो लैटिन अमेरिका वालों को सेवा करने के लिए UN वालों ने अपना सेंटर वहाँ चिले में खोला, और वहाँ पे हम जाते थे, कई लोग थे वहाँ पे, तो उनको खास उस वक्त मुझे इतनी स्पेनिश नहीं आती थी ज्यादा, तो मुझे बाद में ये लगा कि अगर जाती वहाँ पे सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग के विषय में अगर क्लासेस होते तो बहुत अच्छा होता. You thought about it, isn't it, that you should conduct this? I had this thought, because I don't speak Spanish, this way I can serve in English. Yeah. Baba kept my intellect. Excellent.
मुझे लगा कि ये बस ये बात परमात्मा की टचिंग है, बाबा ने मेरे बुद्धि को टच किया कि मुझे वैसे भी इतना ज्यादा स्पेनिश नहीं आता है, तो इंग्लिश आता है, तो मैं जाके सकारात्मक चिंतन के ऊपर क्यों ना प्रवचन करूं यहाँ। So at that time, maybe 1, 2, 3, 4, 5, 6 souls took birth to Baba like this. Now they're kind of contact souls. They're kind of relaxed a bit, but at that time they became Paka. तो उसी दौरान ये सकारात्मक चिंतन करते करते 6 आत्माएं बाबा के बने और ऐसे ही पक्के बच्चे बन गए। खैर अभी वो इतने पक्के नहीं है, पर उस वक्त वो बहुत बाबा के पक्के बच्चे थे। अभी वो संपर्क वाले बन गए। And so after 2 years, there was some situation in France, and the service in Chile was getting stable. So I went back to France to help. तो उसके बाद फ्रांस में कुछ ऐसा सिचुएशन परिस्थिति आई कि मुझे वहां सेवा के लिए जाना पड़ा, इसलिए मैं चिले से निकल फ्रांस चली गई। And so I was in a city called Lyon for 6 months, and then I was in another city called Toulon for 6 months. What's the first city name, sister? Lyon. Lyon. And the second one is Toulon. It's the second biggest city of France, Lyon. Lyon. And what was the second city? Toulon. Toulon. अच्छा, मैं यहाँ से चिले से निकल फ्रांस गई और वहाँ पे लियो करके पूरे फ्रांस देश में सबसे दूसरी बड़ी शहर, वहाँ गई। 6 महीने वहाँ पे रही, बाबा की सेवाएं की। फिर उसके बाद दूसरे शहर टूलो करके वहाँ पे मैं 6 महीने रही, बाबा की सेवा की। So it was, helping in Baba's center, doing things. And after a while, there was an opportunity to go to Washington, D.C. to do service for Baba, because there was a sister who was happy to let us use her flat. And somehow they thought of me, I don't know why, but I was invited to go. तो फ्रांस में कुछ खास सेवा, मतलब बस सेंटर पे रहना, सेंटर की देखभाल करना इत्यादि सेवाएं करती थी। उसके बाद मुझे खास एक निमंत्रण मिला वॉशिंगटन डीसी में आने के लिए, बाबा की सेवाओं के लिए ही, क्योंकि वहां पे एक बहन थी और उसका अपना एक फ्लैट थी। तो फ्लैट हमको मिला और फिर मुझे वहां निमंत्रण मिला, तो मैं गई बाबा की सेवाएं करने। And this was a beautiful opportunity also, because I was only there for 3 months, but in 3 months I had the fortune of having the visit of Daddy Ratan Mohini and Daddy Gulsar in that little flat. मैं उस छोटे से फ्लैट में रही 3 मास, पर ये 3 मास भी बड़ा यादगार रहा, क्योंकि उतने ही समय में दादी रतन मोहिनी जी भी आए, दादी गुलजार जी भी आए वहाँ। So it was very special to be able to do service in USA, because I did not have that experience. It was my first opportunity to serve there. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में सेवा करने का ये मेरा पहला मौका था और ये मेरे लिए बहुत विशेष अनुभव मिला वहाँ सेवा करके। And afterwards my visa finished, so I came back to Paris, and then Daddy Janki and Sister Genti, they asked me if I wanted to go to Costa Rica, Central America to do service. तो जैसे मेरा वीसा कंप्लीट हो गया, 3 मास के बाद वापस मैं पेरिस आ गई, और फिर दादी जानकी जी ने मुझे पूछा, दादी जानकी एंड जयंती बहन एज वेल, इजंट इट? Yes. जयंती बहन दोनों ने मुझे पूछा कि मैं क्या बाबा की सेवाओं के लिए कोस्टा रिका, सेंट्रल अमेरिका जा सकती हूँ? तो मैंने कहा ठीक है। There was a very good, there is a very good contact sister, friend of Daddy's and Baba's there, who was giving us a big house from which to do Baba's service. तो वहाँ पे बाबा की सेवाओं के लिए बाबा का मित्र कह सकते हैं, या दादी जी के बहुत ही करीबी दोस्त है, तो उन्होंने अपना बड़ा सा घर दिया सेवाओं के लिए। And so I stayed there for 10 years. तो वहाँ पे मैं 10 साल रुक गई बाबा की सेवा करते करते। And there is a very nice family now there. बहुत ही अच्छा परिवार है वहाँ का,
very sweet family. बहुत ही स्वीट, बहुत ही मधुर, बहुत ही विशेष परिवार है वहाँ का. And then one of the things is that my Lokik family is partly from Switzerland. So there was some things happening and they needed help in Switzerland service. And so I told Daddy about my Swiss relative. My grandfather was Swiss. And she said, yes, you should try and get the passport. So I did. What did Daddy ask you? To get a Swiss passport. Swiss passport. Okay. Because my grandfather being Swiss, I was entitled to it. तो फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड जो मेरा जन्म स्थान है, मतलब is it your birthplace, Switzerland? Paris is my birthplace. Paris is your birthplace. My grandfather is from Switzerland. And my mother was born in Switzerland. हाँ, तो मेरे दादाजी का ये जगह है स्विट्जरलैंड और मेरे माँ का भी ये जन्म स्थान है. तो मेरे जो लौकिक परिवार है, कुछ लोग स्विट्जरलैंड से हैं, तो इसीलिए वहाँ कुछ उनको जरूरत थी, मेरी कुछ हुआ परिवार में उन दिनों में और मेरी जरूरत थी, तो इसीलिए मुझे आसान भी था, क्योंकि मैं दादी से जब बात की तो दादी ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए तो आसान है क्योंकि तुम्हारे दादाजी, नाना जी शायद, क्योंकि माँ और माँ, your grandfather is your mother's father, isn't it? Right. Yeah. तो मेरे माँ और माँ के पिताजी अर्थात मेरे नाना जी दोनों वहाँ के हैं, तो मुझे दादी ने कहा कि वीसा लेके तुम जाओ वहाँ. Swiss passport, not only visa. Swiss passport. She is asking about passport. Yeah. Oh. Yeah, So I was Swiss... able to get the passport, Swiss, and so I have both passports now, French and Swiss. तो मेरे पास दो प्रकार के पासपोर्ट है. पासपोर्ट माना सिटीजनशिप, दो प्रकार के पासपोर्ट माना दो प्रकार के सिटीजनशिप, isn't it? मैं यहाँ स्विट्जरलैंड का भी मेरा पासपोर्ट है और फ्रेंच का भी, फ्रांस का भी. Yes, because when you have the nationality, it's a lot easier to settle and live. Because if you only have a visa, you're not able to do many things. जब आपको इस देश की नागरिकता मिलेगी तब काफी कुछ यहाँ पे कर सकते हैं. सिर्फ एक वीसा लेकर आएंगे तो बहुत ही रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन रहती है, हदें होती है सेवा करने में. So I stayed in Switzerland for about 12 years. 12 साल में स्विट्जरलैंड में सेवाएं करती रही. Then I took care of Baba's home in Geneva, and also Baba's service I helped with Baba's service at the UN. So यहाँ पे रहते मैंने बाबा की सेवाएं की, अर्थात बाबा की सेंटर संभाला जेनीवा में, और help with Baba's service at the UN. United Nations में जो बाबा की सेवाएं चली, उसमें भी मैंने सहयोग किया. Sister Genti is the main representative, but she doesn't have time to do so much of the work there, to meet with people, speak with people, organize events. So this is my job at the moment. जयंती बहन इसकी मुख्य रिप्रेजेंटेटिव रही यहाँ, परंतु वो उनके इतने काम रहते हैं कि वो हर बात यहाँ लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये सब हर बात में उनको समय निकाल के आना मुश्किल था, तो इसलिए मैं वो सब संभालती हूँ. So at the moment at the UN I'm working a lot with human rights because this is Geneva's specialty. तो मैं अभी मानवीय मूल्य, ह्यूमन राइट्स नहीं, मूल्य नहीं, वैल्यूज नहीं, राइट्स, अधिकार, राइट्स तो मानवीय अधिकारों के लिए मैं अभी काम करती हूँ, क्योंकि जेनीवा यहाँ यूएन ऑफिस का मुख्य उद्देश्य ही है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो मैं इसी विषय में सेवा कर रही हूँ. And one of the topics I follow is climate change and human rights,
Another one is freedom of religion and belief. And another one is the status of women. So 3 मुख्य विषयों पे मैं यहाँ सहयोग देती हूँ क्योंकि यूएन में बहुत सारे ऐसे विषय पर वो गौर करती है और काम करती है, पर 3 मुख्य विषय पे मैं यहाँ सहयोग देती हूँ। एक है क्लाइमेट चेंज, मतलब बहुत तेजी से बदलती हुई वातावरण, तो उस विषय में मैं सहयोग देती हूँ। और दूसरी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम बिलीफ सिस्टम। Freedom of religion and belief. एंड बिलीफ, ये बहुत सुंदर टॉपिक है। सिस्टर, दिस इज सो नाइस, यू नो, इवन लिसनिंग दिस टॉपिक इज सो गुड। मतलब धर्म और मान्यताओं से स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र होकर चुनने की अपना धर्म और मान्यता। And the Freedom. third topic, And the third one is women. yeah, status of women. So And- महिलाओं के लिए। And the fourth is environment. चौथा है पर्यावरण। तो इस तरीके से 4 विषयों में मैं यहाँ सहयोग देती हूँ। And it's a very particular work because it's not a work where you give gyan. You have to represent Brahma Kumari and the kind of work we do with the community. यहाँ की ये जो सेवा है ये बहुत ही अलग प्रकार की सेवा है। यहाँ हम जाके डायरेक्टली किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, ये एक समाज है, कम्युनिटी सर्विस है। Yeah, it's like Brahma Kumari has an expertise. We know India, we know the people, we know what they need, we know what they want, we know the values they uphold, so we represent that to the UN. क्योंकि ब्रह्मा कुमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम भारत को अच्छी तरह जानते हैं, भारत की मूल्यों को, भारत की जरूरतों को, भारत की संस्कृति को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम भारत को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। Yeah, and also then we do the other one, which is, you know, at the UN we are having international law, so we bring this knowledge to our university. वहाँ पे यूएन में अंतरराष्ट्रीय लॉ है, तो उसको हम अपनी विश्वविद्यालय में लाते हैं। You bring the law to our university. Yeah, because like, for instance, if in Vietnam, they have problem with the government related to freedom of religion and belief, I can denounce what's happening in the name of Brahma Kumari, or I can tell the sisters in Vietnam. It's only an example. Okay, it's not right. true. But I mean, you know, you have the capacity of bringing these rights locally, of making people aware of the rights we have, and bringing the complaints regarding the rights back to the United Nations if there is complaints. So it's a bridging of gap between the people, common people, and increasing the awareness about the laws that UN is making for the benefit of people, the government. Yeah, you could say so? that. Yeah, for instance, if there is a gap in the human rights of people regarding freedom of religion and belief, to take one example, or regarding the status of women, we can denounce this to the UN with the proper you know, in the proper way, so that the government of India, if it's because of the government of India, is notified, can be notified. Do you understand what I'm saying? I'm trying to. So who will notify government of India? You or UN? No, it's like I can guide you on how, I can guide the people who need to understand how to complain, to complain. Okay, all right. You know, when you I got it. I got it. इनका ये विशेष योगदान इस प्रकार है कि उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जैसे समझो वियतनाम में वहाँ पे
लोगों को अपनी मूल्य राइट्स का कुछ उनको पता नहीं है और वो ऐसे अज्ञान में बहुत सहन कर रहे हैं। तो मैं उनको मदद कर सकती हूँ कि उनके अधिकार क्या है समझाने के, और फिर उनका जो भावना, उनकी कंप्लेंट है, मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा सकती हूँ ताकि उन लोगों के लिए कुछ समाधान हो सके। But also working Am at I the right? UN, Vinish bhai, you can correct me. also working at the UN, we have the possibility of organizing events. तो क्योंकि with यूएन के लिए other हम काम करते हैं, organizations. क्योंकि यूएन के लिए काम करते हैं तो इसीलिए हमको ये बहुत अच्छा सुअवसर है यहाँ कि हम ऐसे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। And also, for instance, working with climate change for many years, we have been getting the UN to adopt certain laws in protection of the human rights of people related to climate change. So it's a bit complicated, but I'm just trying to let you know what I do. It's very nice. As actually, we appreciate you because when you speak itself, it is looking a bit complicated, but when you're doing it, probably I'm sure it would be more powerful. So it's like working with countries to try and make them aware of the ethical decisions they need to take. इतने सारे देशों से, इतने सारे सालों से यूएन के साथ मैं काम कर रही हूँ, इतने सारे देशों के साथ, कि हम वहाँ के लोगों को ये अवगत कराते हैं जो लॉ बनी है, जो जिनकी उनकी बेनिफिट के लिए, कि वो क्या है करके हम उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं। I'm explaining all this because Minesh Bhai asked me to explain a bit what I do at the UN. It's good, it's good. So otherwise, I don't know if you have any question. I'm happy to answer. आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं बड़ी खुशी से आपको जवाब दूंगी। किसी को कुछ पूछना है? भाई और बहनों को पूछ रहा हूँ। दरेश भाई, कुछ और जानकारी चाहिए आपको? नरेश भाई, अच्छा, क्या पूछना है दरेश भाई, बोले। ओके ओके सिस्टर, there is no Yes, go ahead, sister. Sister, what's your present physical age? Because I've been counting 29 and then 10 years there and 2 years there and 6 months and plus 6 months, two in different cities. I'm getting close to 60. Oh, wow. That's nice. Congratulations. Thank you. Thank and you. What's your present Purusharth? My present Purusharth is being antarmukh, so that I see inside the soul and what needs to be changed and how I can make that work of connecting to Baba and connecting to original awareness of the soul and dropping body consciousness. तो अभी मेरा अभी का पुरुषार्थ है मेरा कि अंतर्मुख होके अपने स्व को देखना, आत्मा को देखना। बाकी तो उन्होंने काफी हिंदी शब्द ही उपयोग किए हैं तो शायद समझ गए होंगे। Sister, one more question. As we heard that your work is more with people, talking with people, making them aware about the loss and bringing benefit to all of these things. Amidst all of this, because now since over a year it is like COVID time. It is there everywhere in the world. How is Switzerland? How are you still doing your job? Okay. Actually, one of my work I haven't told you, which is probably what I do the most at the moment, I coordinate interfaith. So it means I work with the different religions around the world to bring more importance of the awareness on climate change and the need for decisions, proper decisions to be taken for climate change. हमने पूछा कि आपका अपना काम के सिलसिले में
काफी कुछ बोला कि आप लोगों से मिलते हो और लोगों को लॉ के बारे में अवगत कराते हो, अभी इस माहौल में आप अपना काम कैसे कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि दीदी कहते हैं कि मेरा एक और मुख्य काम है जो मैंने आपको बताया नहीं, वो है मैं सर्व धर्मों को कोऑर्डिनेट करती हूँ, एक जगह एकत्रित करती हूँ और उनकी बुद्धि खास करके पर्यावरण के ऊपर मैं खींचती हूँ, क्लाइमेट चेंज के विषय में उन लोगों को मैं अवगत कराती हूँ। सर्व धर्मों से कोऑर्डिनेट करने का मेरा ये मुख्य काम भी है, अभी मैं वो कर रही हूँ। So in order to do that, I probably have 1 or 2 Zoom calls a week, or 3 or 4 or 5 to coordinate this work. तो ये काम मैं संचालन करने के लिए कभी-कभी हफ्ते में 2, 3, 4 या 5 भी मैं इस तरीके से Zoom मीटिंग्स करती हूँ, बुलाती हूँ, बातचीत करती हूँ। And we organize webinars regarding you know, the last one we did was called Faith for Climate. So it's like all the actions that we want to bring people awareness into the issue of climate, spiritual awareness, understanding of what's at risk, understanding of the science, understanding of the government's positions, understanding of Just a minute, I should not miss anything. You're speaking so nice. I don't want to miss anything. So we organize webinars also. Yeah. हम लोग वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वेबिनार भी इसी तरीके की एक मीटिंग है जहां बहुत सारे लोग ऑनलाइन पे मिल सकते हैं। तो खास करके सभी उनका द टॉपिक इज फेथ फॉर क्लाइमेट। The last one we organized was called Faith for Climate. Faith for Climate. For Climate. Faith for Climate. आप सब समझ सकते हो कि कैसे ये faiths is religions, isn't it? Different religions. मतलब धर्म और पर्यावरण, वातावरण, ये दोनों का कैसे संबंध है और किस तरीके से धर्म लोग, सभी धार्मिक लोग मिलके वातावरण को कैसे अच्छा बना सके। तो इसी विषय पे मेरा पिछले जो समावेश हुआ वेबिनार के द्वारा, मैंने कई इस धर्मों को इसी का यही सेवा में मैं थी। Because you see, we want to inform people from the different religions of what is really happening. मुझे हम लोगों को यहाँ सभी धर्म वालों को बताना है कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है। In the UN, at the level of the different governments, at the level of science, of economy. 4 स्तर पर मैं यूएन में और फिर अलग-अलग प्रभुत्व गवर्नमेंट्स जो है उनको और फिर साइंस के स्तर पे उनको और एनवायरनमेंट फोर्थ वन एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी एनवायरनमेंट और पर्यावरण और इकोनॉमी इन सभी लोगों को मुझे बताना है कि अभी का हाल कैसा है about to make them aware about the present situation, isn't it, about climate change? So last time we had Sister Genti, so she spoke about spiritual awareness. पिछले बार हमारे साथ सिस्टर जयंती जुड़े थे और उन्होंने खास विषय में बात किया स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आध्यात्मिक क्या कह सकते हैं, जागृति। Yeah. Please continue. So what happens is that we also work in order to, within the Brahma Kumaris, outside of India, we have also worked a lot for people to start having more of a green awareness of the environment. भारत से बाहर Kumaris, within the Brahma Kumaris. भारत से बाहर ब्रह्मा कुमारीज के संस्थाओं में ही हम लोगों ने बहुत काम किया हरित के बारे में, अर्थात ग्रीन चीजों, पर्यावरण के विषय में हमने काफी काम किया. Sister, I just would like to share here that my Didi here, Reva Ben, who is in charge of the center, we have our own garden here in the center,
and we make our own manure, and most of the Baba's kitchen, bhog and everything, it comes from Baba's garden, except the fruit, but all the vegetables, mostly they come from Baba's garden. Fantastic. But you see, there is many things that we can all change to be more friendly to the environment. Here we are trying. We have removed plastic from the kitchen. Very good. Tell them that, because in Bharat they're not so friendly. You tell them that we are trying to get the BKs to be more friendly toward the environment, not using plastic and serving the elements. बहन जी कहते हैं कि खास करके ब्राह्मण परिवार में ये एक जागृति होनी चाहिए पर्यावरण के प्रति, और थोड़ा हम लोग जागरूक हो और जिम्मेवार हो जाए, और खास करके इन्होंने कहा कि प्लास्टिक चीजें का उपयोग कम करें। So that's वाली प्लास्टिक मतलब एक बार यूज करके फेंकने वाली प्लास्टिक तो बिल्कुल उपयोग ना करें। यूज एंड थ्रो प्लास्टिक बिल्कुल उपयोग ना करें, परंतु अच्छी वाली अगर हो तो कुछ रखकर कर सकते हैं। वास्तव में प्लास्टिक निषेध करें तो अच्छा है। भारत में ये नहीं मान रहे हैं, परंतु अगर हम गौर करें तो अच्छा है। And also serving the elements. 5 तत्वों की भी हम बाबा के बच्चों को सेवा करनी चाहिए। Because Baba has explained to us that, you know, in order for golden age to happen, we need to change our relationship individually to the environment. बाबा ने कहा है अगर सतयुग को लाना है तो हम सब अपने आप 5 तत्वों के साथ हमारा जो संबंध है उसको ठीक करना पड़ेगा, और हर कोई अकेला करना पड़ेगा। This is essential to bring golden age. ये बहुत ही जरूरी चीज है, अगर सतयुग को लाना है हर कोई अपना खुद का रिश्ता 5 तत्वों के साथ ठीक रखना है, ठीक करना है। Okay. So does it require too much paperwork to deal with United Nations? It did initially. We needed a lot of paperwork, and we also need to do reports very often. भाई साहब ने ये प्रश्न पूछा कि आपको अपने काम में क्या बहुत सारा कागज लिखा पड़ी पत्र लिखना पड़ता है, तो उन्होंने कहा शुरुआत में काफी कुछ करना पड़ा, पर ठीक है। There is one question, sister Geeta is asking a question. How does sister connect or approach to the interfaith groups? Okay. What? Just ये प्रश्न पूछा कि आपको अपने काम में क्या बहुत सारा It's getting repeated. The question is, how does sister connect or approach to the interfaith groups? How did you approach to interfaith groups? I understood. What happens is that you have to see, I'm sitting within the UN organization with the governments and with all the other NGOs that are working for the climate. Explain that first. तो thank you. मैंने क्या किया, यहाँ प्रश्न है, गीता बहन ने पूछा कि बहन किस तरीके से सभी धर्म वालों को अप्रोच करती है, मतलब जाके बुलाती है, किस तरीके से वो सभी से बात करते हैं। तो इन्होंने अपने जवाब में कहा, yes please sister, you want to say something? Yeah, I want to go on explaining when you finish translating. So what happens is that when I am at the UN, I organized with some people some meetings of all the different faith-based organizations that work with climate change. So some work with climate relief, some with disasters. मैं जब यूएन में हूँ यहाँ मैं बहुत सारे प्रभुत्व गवर्नमेंट्स के साथ काम करती हूँ, और दूसरे धर्म के लोगों को मैं मीटिंग में बुलाती हूँ, और खास करके वो धर्म जो कुछ लोग क्लाइमेट चेंज के विषय में रुचि रखते हैं, कुछ लोग डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर इज अ क्लाइमेट, व्हाट इज इट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, am I right? No. What happens is that, you see, you already, if there is the tsunami,
who is going to give relief to people. One is the government, but the other is the Christians, the Muslims, the Hindus. So all the different religions are acting for the people. So these people then, they are part of a big organization, and they send their representative to the climate change conference. So at the climate change conference, I invite all the different religions to come and meet and share experience. Right, right. तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, और खास करके बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें सभी धर्म के अनुयायी वहाँ पे रहते हैं, और उन एनजीओस को, उन धर्म वालों को मैं बुलाती हूँ यहाँ पे, और एक मंच पे उनको अपना अनुभव, खास करके फॉर एग्जांपल सुनामी आता है तो वहाँ पे लोगों की मदद कौन करेगा? एक तो गवर्नमेंट करती है, और दूसरा अनेक धर्म जो है वो भी करते हैं, ये चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर मुसलमान हो या हिंदू धर्म हो, कौन धर्म वाले हैं जो अपने उन लोगों को मदद करते हैं। तो इस विषय पे मैं सभी को बुलाती हूँ, और क्लाइमेट के विषय पे मतलब ये जिम्मेवारी जागृत करने के लिए सब आके अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो क्या करते हैं। And amongst these religions also, some have created specialists who are looking into the rights of the people in relation to the climate change with a vision of religion. So it's like a speciality they have created. यहाँ पे भी इस पूरी सभा में कुछ ऐसे विशेष लोगों को भी बनाया गया है जिनको स्पेशलिटी है, खास करके। Sister, you need to repeat that. It's like, you see, yeah, the specialist who can really guide the religions. Exactly. Politically, at the work of advocacy, in the work of awareness raising, in the work also of going back home and telling your government, you have said in Geneva you were going to do that, now you need to do it. You see what? Right. Right. Let me just complete. So इस विषय में कुछ एक विशेष व्यक्तियों को चुना गया है, और इनका काम ये है कि वो गवर्नमेंट को समझाएं कि आप लोगों ने ये वायदे किए हैं अपने लोगों को करने के लिए, और आपको करना पड़ेगा करके। ये धर्म वालों को भी समझाना है कि उनको क्या करना है। ये स्पेशलाइज्ड लोगों का काम है, ये विशेष चीजों के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दे, ताकि गवर्नमेंट को भी एडवाइस करते हैं, धर्म वालों को भी एडवाइस करते हैं। So all these different people from the different religions, I invite to meet and speak. And so मेरा काम ये है कि ये विभिन्न धर्मों के विभिन्न लोगों को मुझे मिलाना है और बात कराना है आपस में। So we have created a group like that. तो इस तरीके से मैंने, sister, small is very good for me. You see, I'm not so very professional. So मेरा काम ये है, मैं सभी को इस विषय में मैंने छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाए हैं। Not so छोटे, it's quite big now. मतलब जब बनाया छोटा था, अभी ये बड़े-बड़े ग्रुप्स बन गए। Okay, so I hope I answered your question. Thank you so much. Sister Valariane, I would like to really thank you personally. Why? Because you're able to understand what I'm translating. Wherever I'm missing out, you're really helping me by repeating it. Thank you so much from my end. Okay. My pleasure, my pleasure. That's one of my Baba's work. I'm an interpreter for Baba, so I catch languages. Wow, what a fortune, you see. I'm interpreting the Baba's interpreter. Yeah, you're very good. Okay. Baba is good. Thank you, sister. Baba, अभी पूरा करें. जी, बहुत थैंक यू जो आपने इतना अनुभव सुनाया, और गौतमी बहन को तो डबल थैंक यू, क्योंकि आपने फिर हिंदी ट्रांसलेशन करके सबको सुनाया, तो बहुत थैंक यू। और हम आपको निमंत्रण देते हैं कि जब आप भारत में आओ तो बड़ौदा में जरूर आना है। हम सबको निमंत्रण देते हैं कि भारत में जब आओ, ये कोरोना खत्म हो जाए तो बाबा के पास तो आना ही है मधुबन में,
तो फिर बड़ौदा में जरूर आना है। अहमदाबाद से बड़ौदा 1.5 कलाक का ही रास्ता है। Sister, did you understand what she said? I understood some, probably 60%. What you understand? She was saying thank you to the sister for translating in Hindi. She was saying thank you for speaking. She was saying that it was important to be close at this time of COVID. Of course, they're close to Madhuban, but we are all missing Madhuban. This is Great. not What you said is also so beautiful. This is But 100%. what, Champa? This is not 60%. This is 100%. Yes, yes. You caught the bhavna, you know, the hearty feelings of Champa Behenji. Yes. She also invited you. So, She said that once the COVID atmosphere gets settled and everything finishes, then you have to come to Madhuban anyway. You cannot be away from Madhuban for a long time. So when you come to Madhuban, please do come to Baroda, because Baroda is just 1.5 hour journey from Ahmedabad. Thank you. Thank you so much. so in short, she is very sharp-minded. Gautami Ben, she is sharp-minded, and sister, you should add one more language. Now you know Hindi also. Okay. Yes. So you are aware with Hindi also. Okay, great. So it's a time to meditate for 2 minutes, and then we will finish. Okay. Once again, thank you very much. Thank you, Maharaj Bhai, for inviting me. Life is a gift of God, full of challenges. Let us make it easy, colorful by making Him our friend. God is my friend, God is my friend. My friend is very sweet. God is my friend, God is my friend. My friend is very sweet. शांत चित निर्मल शीतल सद्भाव भरा व्यवहार हो, स्नेह सुख सरगम सा स्वर, सबसे रूहानी प्यार हो। मुस्कान रूहानी जो सबको दिल में हो रहम भाव। God is my friend, God is my friend. My friend is very sweet. God is my friend, God is my friend. My friend is very sweet. Om Shanti.